Good afternoon, all. Am I audible? Yes, ma'am. Kame madam, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Welcome, ma'am. Good afternoon, ma'am. I, Kalyani Kamble, feels privileged to welcome you in the second session of 10-day 10-day certificate course in English communication and English grammar and English grammar and communication skills. Welcome you, ma'am.
Very good afternoon, ma'am. I, Kalani Kamble, is privileged to welcome you in the second session of 10-day certificate course in English Grammar and Communication Skills. Yesterday's session was very interesting and intellectual one. Now, I request our resource Excuse me, person, ma'am. Dr. Excuse me, ma'am. Yes, मैम आपका डबल वॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा. okay. Now, I request our, okay, ma'am. Good Now, I afternoon. Good request afternoon. to welcome you. Now, I request our resource person to deliver the second session. Over to Um, you, ma'am. Kalyani mom, Yes, just a minute. Wait for 2 minutes because students are joining. Let them join. okay. Yes, Kalyani mom. Now we have to start. Okay, ma'am. Now I request our resource person to deliver the second session. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, Neil, madam. May I start now? Yes, mom. You have to proceed. Yeah. Our 82 students are joined from a Google Meet, mom. Okay. Yes, I could see And the rest number of of the students, participants. they will join from YouTube. Okay. Is there any disturbance, mom? मैम मुझे दो अलग अलग वॉइस एक पुराना रिकॉर्डिंग भी सुनाई दे रहा है पीछे से इन द बैकग्राउंड. Now, सी नाउ अभी आपको फिर से मेरा आवाज सुनाई दे रहा है. I'm listening you clearly. Your voice is clear. From my side, is it clear, mom? Hello? Mom, is it clear from my side now? मैम आई कुड सी जो अभी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है ना वो हाँ हाँ. मैडम डिस्टरबेंस हो रहा है. Uh, Kalyani mom. Kalyani mom. Kalyani mom. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think we have to start once again from the beginning Okay, ma'am. because students also they couldn't understand what goes on because of the interruption. So I think we have to start once again from the beginning. Okay, Kalyani mom, am Yes, I ma'am. audible to you? Okay. Yes, ma'am. You are audible. Okay. I think you have to raise the mic volume of your mic, otherwise your mobile. If you are just conducted from your mobile, so please. Am I audible now? Am I audible now? Am I audible now? Yes, madam, you are audible. Good afternoon, all. I am Kalani Kamble. Welcome you in the second session of 10-day certificate course in English grammar and communication skills. Yesterday's session was very interesting and intellectual one, and we all are greatly benefited by it. Now, I request our resource person, Dr. Bhumika Agarwal ma'am, to deliver the second session. Over to you, ma'am.
Bhumika ma'am, let's begin. Let's start our session. We have to begin now. Ma'am, wait. Yeah. Good afternoon, students. From my side, I am completely ready. But I think you could also hear that once the conversation is over, after 2 minutes, you are hearing the same conversation again. Is it happening with you also? No, ma'am. No, ma'am. So, No, ma'am. okay, so fine. From my side, am I clearly audible now? Yes, ma'am. Yes, Okay, so ma'am. let us begin. So I hope all of you must have kept your yesterday. ये देखो अभी फिर से रिपीट हो रहा है आपको आवाज. Yes, ma'am. Ma'am, your voice is clear right now. Students, is there any issue, beta? Are you getting the echo? Echo of sound? No, ma'am. No, na? And No, No, ma'am. ma'am. first person, Bhumika mom's from Bhumika mom's side, the sound is clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me start. We will see if some technical glitches are there. We will see it afterwards. Let me start right now. So I hope all of you must be ready with your notebook and a pen. Yes, ma'am. Yeah. Yes, Okay. ma'am. So today our topic is subject verb agreement, and unless and until you won't understand the tenses, you cannot understand subject verb agreement. So just let me know to have a very quick revision. Can somebody tell me any one sentence in simple present tense very quickly? One sentence I want in simple present tense. Ma'am, I She eat mango. she walks on. I eat a mango. Very good. Somebody tell me another sentence in present continuous tense. She is walking on the road. She is Walking on the road. very good. She is walking on the road. Somebody has written, Vaishnavi has written, I am writing a letter. Very good. Give me an example of present perfect tense. Yes, Mayur, give me example of present perfect tense. Mayur, Ram, anybody? Ma'am, Rahul have notes. बेटा राहुल हैव नहीं आएगा रुद्र. Rahul has. Rahul has notes. राहुल हैज नोट. क्या नोट? Uh, I have gone fishing since I was child. ओके. अब यहाँ पे देखो किसी ने लिखा है रुपेश हैव गॉन टू होम. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. विल समबडी करेक्ट दिस सेंटेंस? रुपेश हैव गॉन टू होम. आप चैट बॉक्स में लिखो. किसी ने लिखा है रुपेश हैव गॉन टू होम. उसको करेक्ट कौन करके दिखाएगा? Rupesh has gone to home. वेरी गुड. रुपेश हैज गॉन टू होम. मयूर बोरकर आपका भी सेंटेंस इज रॉन्ग. यू हैव रिटन आई हैज गो टू कॉलेज. Who will correct this sentence? I have go to college. I have go to college. That is also wrong, Khushi. I have gone to college. Yes, it should be I have gone to college. Now, the students who are committing mistakes in have and has, all of you in your notebook, Mayur Borkar, again you are wrong. You have written I has gone. Gone की भी spelling तुमने wrong लिखी है.
I has gone to college is absolutely wrong. It should be I have gone to college. So those who are committing mistake again and again in have and has form, all of you in your notebook, note down, लिखो अपने notebook में. If the subject is singular, write down whatever I am saying. If the subject is singular, use has. Use has, HAS. Now again write down, if the subject is plural, if the subject is plural, or I, or you, YOU. If the subject is plural, or I, or you, comma, use has, use have, HAVE, use have. If the subject is plural, or I, or you, use have. And if the subject is singular, you should use has. Now somebody give me an example of present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल दो. He has been dancing since morning. Very good, Aditi. Beautiful example you have given. She has been dancing since morning. Beautiful example. Even Smita has been writing a letter. He has been playing cricket. I have been eating mango. Wonderful examples. Now, I am telling you one example and you have to identify the tense. Okay, I'm speaking one sentence. You have to identify it is in which tense. Listen. Tomorrow I will attend a marriage party. Identify the tense. I am repeating the sentence. Tomorrow I will arrange a marriage party. Simple future tense, ma'am. Very good, very, very good. All those who have Simple given future tense. examples also. Good. Another sentence. Another sentence. Listen carefully. I had been teaching English. Past perfect continuous tense. Very good. Past perfect continuous tense. It is past perfect continuous tense. And one last sentence. I wrote a letter. Simple past tense. Simple past tense. Simple past tense. Raj, you were so quick to answer. It means you remember all the tense very well. Good, very quick answer. It means you remember all the tenses very nicely. So I wrote a letter. It is in simple past tense. So I believe most of you now are able to identify the tense. So now, before yesterday, I had told you that you can make 48 different sentences using one sentence. So now, all of you, what you have to do, I will give you some tips for subject verb agreement. And before I forget everything, I request all of you to remind me. आपको मुझे remind करना है that towards the end of today's session, I will send you one chart. So I will send you that chart in the chat box. Will you be able to download it from chat box or not possible? Possible होता है क्या? Yeah. No. Okay. Will it be okay if I give that chart to your madam, Snehal madam? Yes, ma'am. And then she will post that chart in your WhatsApp group. Okay, because for tomorrow's session, कल हमारा जो session है change the voice. For change the voice session, those two charts are essential. So today I will post those two charts to Snehal madam's mail, and then she will forward it to your WhatsApp group. Okay, fine.
Yes, somebody's suggestion is good. Jayesh has given a good suggestion that you can take its screenshot also. So Jayesh, I will do that also, and I will forward the chat to Snehal madam also. So, but remind me that towards the end of today's session, I have to show you the chart so that you can quickly take its screenshot. Fine. So let us start today's session. So I am sharing the screen with you. Let me know whether you are able to see the screen or not. Yes, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So today's topic is subject verb agreement. So subject verb agreement means you all know that in any language or let us talk about Hindi. I request all the students to please mute you themselves. Somebody's noise is disturbing. Please mute yourself. Okay. Now, in subject verb agreement, almost in most of the languages, according to the subject, verb changes. For example, if I say, मैं आम खाती हूँ आएगा या खाता हूँ आएगा, if I am talking about myself, I am being a feminine gender, I will say, मैं आम खाती हूँ. खाती हूँ. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पिताजी आम खाते हैं. खाते हैं, मेरा बेटा आम, खाता है. so it is for senior we say खाते हैं. For if somebody is senior to you, if somebody is junior to you, हम बोलते खाता है. और अगर लड़की है तो हम बोलते खाती है. So similarly in English also, according to subject, the verb changes. If the subject is singular and the sentence is in simple present tense, for example, she goes to college. लेकिन अगर मुझे बोलना है आई, तो आई के साथ कैन आई यूज गोज? No, I cannot. So I have to say I go to college, but she goes to college. So this is the subject verb agreement. So according to subject, we have to decide whether it will be simply go or it is going to be goes. Similarly, the teacher teaches in the classroom. But if I say the teachers, if the subject becomes plural, so I have to say the teachers teach in the college. So what I want to say is that according to subject, our verb changes. Sometimes it could be teaches or it could be teach, and therefore we need to properly see subject first, and accordingly we have to make use of correct verb. So see here, what is subject verb agreement? It is the grammatical rule that the verb or verbs in a sentence must match the number, person and gender of the subject. तो अभी मैंने बताया हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर. लड़का आम खाता है, लड़की आम खाती है, माता पिता आम खाते हैं. सो इफ इट इज प्लूरल, माता और पिता प्लूरल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, खाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू जेंडर, according to person, first person, second person, third person, the verb changes. So could you see a small chart on your screen? So see here, if the subject is first person, first person में कौन से दो subjects आते हैं, I और we. सिंगुलर इज आई एंड प्लूरल इज वी. तो जब भी फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है, अगर सब्जेक्ट आई होता है सेंटेंस में या वी होता है, तो हमको वर्ब क्या लेना है, आई रहेगा तो वी हैव टू यूज एम. अगर आई है तो वी हैव टू यूज हैव. सिमिलरली प्लूरल में क्या रहेगा, अगर वी है तो वी हैव टू यूज आर. हम वी के साथ इज यूज कर सकते हैं क्या, नहीं. नॉट वी कैन यूज एम विथ वी,
तो हमको am जो वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब है, वी हैव टू यूज ओनली विथ I. Similarly, are, this helping verb we can use only with all plural subjects like we or teachers, players. Players are playing. Teachers are teaching. Ministers are delivering speeches. तो इस प्रकार से if the subject is plural, we will use are or have. नाउ इफ सेकेंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन, दैट इज यू. सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है, दैट इज यू. तो यू कैन बी सिंगुलर ऑल्सो. अगर मैं एक अकेले लड़का मेरे सामने है, वन सिंगल बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई कैन से यू आर अ गुड बॉय. लेकिन बहुत सारे लड़के मेरे सामने खड़े, 8-10 लड़के, स्टिल आई कैन से यू आर गुड बॉयज. तो अकेले लड़के को भी हम यू बोलते हैं और बहुत सारे लड़कों को भी हम लोग यू बोलते हैं. इसलिए यू के साथ यू वी हैव टू ऑलवेज यूज आर एंड हैव. इवन इफ यू इज सिंगुलर वी विल यूज आर और हैव. इवन इफ यू इज प्लूरल वी विल यूज आर. Now third person. If the subject pronoun is third person like he, she, it, then we use is, and if the sentence is past tense we will use was. So he is a good boy. She is a good girl. It is a tiny bird. So in this way, if he, she, it is there, we will use is. And if we have to use like present perfect tense mein we always use have or has, so we will use has. If the sentence is present perfect tense we will say she has completed her work. He has understood his mistake. However, if the pronoun of third person is plural like they, तो हमको दे के साथ हम इज यूज नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज आर विथ दे. सो दे आर एंजॉइंग द शो. दे आर अटेंडिंग द क्लासेस. एंड इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमको हैव यूज करना पड़ेगा. सो दे हैव विजिटेड ताजमहल. दे हैव वर्कड हार्ड. तो हमको दे के साथ क्या यूज करना है, हैव. Now, अब subject verb agreement के there are certain rules which you need to remember. If you want, you can keep on copying also. जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने इसकी कॉपी करना चाहिए, तो आप लोग जो जो आपको लगता है that you can copy from the screen. Now remember, if the subject is singular, add s or es to the verb form in simple present tense. Remember, you have to add s or es in the verb form only in simple present tense. However, if the subject is plural, we need not have to add s or es. For example, he plays cricket. Because subject क्या है, he, और he क्या है, singular. So with singular subject we will add s or es. जैसे he teaches. teaches में हमने क्या लगाया, es. So either you have to add s or es to the verb. So he plays cricket. However, if the subject is plural, he के जगह हमने they कर दिया तो क्या होगा, they play cricket. In that case, we cannot say they played cricket. So it will be they play cricket. Similarly, 365 runs. अब आप बोलेंगे मैडम runs है, प्लूरल है, तो प्लूरल के आगे क्या आना चाहिए, प्लूरल के आगे इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, आर. R.
तो यहाँ पे तो मैंने सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस ना. 365 रन्स. आर चाहिए ना उसके आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So do you feel that the given sentence is wrong? No. No, my dear students, it is not a wrong sentence. Because यहाँ पे जो is आया है वो runs के लिए नहीं आया है, वो score के लिए आया है. 365 runs is not a big score. और score कितना होता है? एक ही होता है. तो 365 रन्स का एक स्कोर हुआ है और उस एक स्कोर के लिए यहाँ पे आया है इज. तो आपको ये भी देखना है कि इन द सेंटेंस इवन इफ द वर्ड्स आर सीम इन प्लूरल फॉर्म यू हैव टू चेक कि वो प्लूरल की चीज के लिए इस्तेमाल किया गया. फॉर एग्जाम्पल 45 kg. अब 45 एक से ज्यादा है मतलब 45 kg प्लूरल है या सिंगुलर है? Plural. प्लूरल है. तो 45 kg है तो अंदर में आर आना चाहिए था, लेकिन वहां पे 45 kg की बैग बताई गई है और बैग कितनी है? वो सिंगल ही है. सो दैट सिंगल बैग इट इज ऑफ 45 kg. देयरफॉर उस बैग के सामने क्या आएगा? इज. 45 kg बैग is not too heavy. Now I am giving you one question. All of you try to solve it. चलो लिखो. सब्जेक्ट लिखो नरेंद्र मोदी. राइट डाउन और सिंपली यू कैन राइट डाउन मोदी. अब आपको मैं वर्ब दे रही हूं स्पीक. SPEAK. आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. मोदी स्पीक well. Now will somebody correct this sentence? कौन इस सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाएगा? Modi speaks well. Very good. Very good, Asminaz. The correct answer is Modi speaks well. Who will explain me कि मोदी speaks well क्यों चाहिए, मोदी speak well क्यों नहीं चाहिए? Who will explain it? Because Modi is singular. Very good, Jayashri. Excellent. Because Modi is singular. And just now I had shown you the slide. और उस slide में क्या लिखा था? If the subject is singular, we will add s or es to the verb. इसलिए क्या आएगा? Modi speaks well. Now I am writing another example in the chat box. I will write that sentence in a wrong way. मैं गलत लिख रही हूं. आपको उसको बताना है. Tell me what is wrong in this sentence. Speaks नहीं चाहिए, speak चाहिए. Speaks नहीं चाहिए, speak चाहिए. All the students in our college speaks well. There is all the students. हाँ, पर जब मैंने लिखा था मोदी स्पीक वेल तो आपने बोला था स्पीक्स, तो इसलिए मैंने अभी स्पीक्स लिखा. क्योंकि मोदी सिंगुलर था पर यहाँ पे ऑल स्टूडेंट वो प्लूरल है. Very good, very good. Because Modi was singular and therefore we use speaks before singular subject. लेकिन यहाँ पे all the students है, तो students is plural और plural के साथ हम लोग speaks नहीं लिख सकते. We have to write speak. Fine. One last sentence I am writing. I have given here two verbs. The teacher teach in the class. The teacher teaches in the class. So tell me, you will use first verb or the second verb? Second verb, ma'am. Second verb. Very good, Rudra. Second अच्छा verb. रुद्र बताओ. Yes, in the class. Yes, रुद्र आप आंसर दो बेटा कि यहाँ पे the teacher teaches in the class क्यों होगा, teach क्यों नहीं होगा. Only रुद्र will answer.
Ma'am, because of it is singular. Very good. Because here we are talking about singular teacher. टीचर एक ही है, इसलिए क्या आएगा? The teacher teaches in the class. Let's move ahead. अब देखो सेकेंड क्या बता रहा है हमारे पीपीटी में. कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन you understand? Yes, ma'am. Can you Yes, give ma'am. examples of collective noun? Yes, ma'am. बोल बताओ examples. क्लास. क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पर क्लास हम एक ही बोलते हैं. सिमिलरली टीम, क्रिकेट टीम. Our team won the match. हाँ, इन वन क्रिकेट टीम देर आर मेनी प्लेयर्स, बट हम पूरी टीम को एक ही बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. सो जब कलेक्टिव नाउन्स होता है एंड यूजिंग दैट कलेक्टिव नाउन्स, इफ यू समबडी इज मेकिंग द सेंटेंस, तो उस कलेक्टिव नाउन को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया. तो बताओ वो सेंटेंस राइट लिखा हुआ है कि रॉन्ग? प्रिपेयर्स लिखा है. 10 स्टूडेंट्स प्रिपेयर्स. इज इट रॉन्ग सेंटेंस और राइट सेंटेंस? Right Ma'am, it is sentence. right sentence. क्यों? राइट सेंटेंस मैम. पर वो तो Because- 10 स्टूडेंट्स हैं, और मैम, अभी तो आपने बताया प्लूरल में एस नहीं लगता. वो ग्रुप मैम वहाँ कहा पे हुआ है डिफाइन वहाँ किया पे. कितने स्टूडेंट्स है. अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स कहा इसलिए. हाँ, Yes, क्योंकि ma'am. यहाँ पे Group वी आर of 10 टॉकिंग. students here. Yes, because here we are talking about one group. Group is one, but in that group there are 10 students. So here for group we will use the verb, not for students. इसलिए ग्रुप सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स प्रिपेयर्स द प्रोजेक्ट. अब दूसरा एग्जाम्पल देखो. अ बैग ऑफ नोट्स, बहुत सारे रुपयों की, was found by him. अब नोट्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ was आना चाहिए या वर आना चाहिए? Where? वेर आना चाहिए, पर यहाँ पे तो was लिखा है. Because bag एक ही है. Very good, because the bag is singular, and that's why here आपको हमेशा blindly जल्दी जल्दी में आंसर नहीं लिखना है. अरे नोट्स प्लूरल है तो लिख दो यहाँ पे where. स्टूडेंट्स प्लूरल है तो it should be prepare. No, first you have to read the sentence completely, slowly and thoroughly. Try to understand here what is the subject. पहले सब्जेक्ट को अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करना है, वेदर हियर द सब्जेक्ट इज 10 स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, whether the subject is simply notes or a bag of notes, and then accordingly you have to choose the right verb. ठीक है? May I write one sentence in the chat box? I'm writing one sentence in Yes, the ma'am. chat box, and you have to identify whether it is correct or not. Yes, I have posted the message sentence in the chat box. Tell me whether the sentence which I have written in the chat box, is it correct or wrong? Correct. Jayashri, you are saying correct, but Vaishnavi has written in the chat box that it is incorrect. Incorrect, ma'am. Incorrect है मेरा sentence? Yes, many students are saying incorrect. तो इसको correct करो अभी. The team of 12 Ma'am. players is playing in IPL. वेरी गुड. मैंने तो प्लेइंग का गलत स्पेलिंग वो गलती से गलत हो गया. ओके, सो द टीम ऑफ 12 प्लेयर्स इज प्लेइंग इन आईपीएल. टेल मी व्हाई वहां पे इज क्यों लगा? प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं. Because team A.
because ग्रुप team ऑफ is पीपल एडमिट किए वहाँ पे. हाँ, because team is one only. Even if that team has 11 players, 12 players, because this time I have heard कि in IPL you can take one impact player also. तो टीम 12 की बन रही है using that impact player. So that is why you have, even if the team has 11 players, 12 players, but the team is single, one, and therefore the correct answer will be the team of 11 players is playing in IPL. Okay, let's move towards third case, that is singular indefinite pronoun. आपको पता है there are some pronouns which are indefinite, like someone, everyone, anyone, all, nobody. So whenever these types of pronouns, they are called as indefinite singular pronouns. उसमें singular और plural दोनों है. If you say all, then they are, that is plural indefinite pronoun. And which are singular indefinite pronoun? Someone, everyone, each, anyone, nobody. These are all considered as singular indefinite pronoun. So whenever singular indefinite pronoun is there, you have to consider that subject as singular. और जो भी हमारे सिंगुलर के रूल्स है, that we will apply. For example, nobody was present for the class, or everybody attends. क्योंकि यहाँ पे अटेंड्स क्यों लिखा? बिकॉज एवरीबडी इज अ subject and everybody is considered as a singular subject. Okay, now again I am writing one sentence in the chat box and you tell me whether the sentence is correct or not. I have written no one dash answering. So tell me what is the Is appropriate word there? Is. No one is answering, ma'am. Very good. No one is answering. Can I write here no one are answering? No. No. No, ma'am. No one is a singular indefinite pronoun. Okay. Let's move ahead. आगे चलते हैं हम लोग. Plural indefinite pronoun. I had told you there is plural indefinite pronoun also, like all, few, many. So plural indefinite pronoun के ऊपर कौन से रूल लागू होंगे? Which are applicable for plural subject. For example, all the students clear the exam. Few students clear the exam. Many students clear the exam. Now again I am writing one sentence in the chat box. You reply it. Few politicians dash good. are Are Very are good. good. हाँ, यहाँ पे we cannot use is because यहाँ पे few बोला गया है, and if for few we will apply the rules of plural subject. Now let's move ahead to the screen. Compound subjects. Compound subjects joined by and are always plural. Agar if there are two subjects, that is called as compound subjects. And if those both the two subjects are you are joining using the word and, तो हम उसको कैसा कंसिडर करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. You can say Ram is a good boy, Sham is a good boy, but Ram and Sham are good boys. अलग अलग बोल रहे हैं तो you can say Ram is a good boy, Sham is a good boy. But if you are combining them and you are using Ram and Sham, then you cannot say is. Ram and Sham, उसमें क्या हो जाएगा फिर?
are good friends. Similarly, a pen and a paper are enough. A pen and paper दोनों मिला के यू आर कंसिडरिंग वन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे पेपर के बाद इज नहीं आएगा, इट शुड बी आर. अ पेन एंड अ पेपर आर इनफ फॉर अ राइटर. Then next case is when compound subject is joined by or nor. या तो और होगा दो सब्जेक्ट्स के बीच में, या नॉर होगा. इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर द सब्जेक्ट एज सिंगुलर. पहले तो सिंगुलर कंसीडर करना. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वन सब्जेक्ट उसमें से प्लूरल है और दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है. मान लीजिए देर आर टू सब्जेक्ट्स और उस दो सब्जेक्ट्स में से वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अनदर सब्जेक्ट इज प्लूरल. तो आपको अब मैडम फिर सिंगुलर को का रूल अपनाना कि प्लूरल का रूल अप्लीकेबल है, तो आपका क्या अपनाना है? द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट विच इज नियरर टू इट. मतलब जो वर्ब के पास है सब्जेक्ट, यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ दैट सब्जेक्ट. अगर वर्ब के पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अप्लाई द रूल ऑफ सिंगुलर. इफ द वर्ब के पास प्लूरल सब्जेक्ट है देन यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर was ready for the class. Now मुझे बताओ, पहले तो बताओ, here which are the two subjects in this sentence? Students and teacher. Students and teacher. अगर students and teacher होता तो बताओ सेंटेंस क्या कैसा होता? Students Students and and teachers. teachers and the teachers ready for the class are Students not ready for and teacher were ready for the class. But here the दोनों के बीच में आ गया नॉर. स्टूडेंट्स नॉर टीचर. तो वहां पे वॉट्स क्यों आया? बिकॉज वॉट्स के पहले कौन सा सब्जेक्ट है? टीचर. एंड टीचर हियर इज सिंगुलर. इफ आई रिवर्स, अगर मैं सब्जेक्ट्स को रिवर्स कर दूं, पहले टीचर लू एंड लेटर ऑन इफ आई टेक स्टूडेंट्स, तो देखो आपका वर्ब चेंज हो जाएगा. Neither teacher nor students were ready for the class. तो अब यहाँ पे क्या हो गया? स्टूडेंट्स प्लूरल है, सो वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट. एंड आफ्टर स्टूडेंट्स नाउ वी कैन नॉट यूज was, we will have to use were. So it will be neither teacher nor. Now tell me, is my sentence correct? Is my sentence correct? आर चाहिए वहां पे? No. My sentence is correct. Yes, ma'am. क्योंकि वहां पे शाम है और शाम सिंगुलर है कि प्लूरल है? Singular. सिंगुलर है. तो आफ्टर सिंगुलर आई हैव यूज इज. लेकिन देखो आप चैट बॉक्स में देखो, ऑल द स्टूडेंट्स हैव रिटन आर. वहां पे ऐसा लिखेंगे कि हम आइदर राम और श्याम आर एबल टू वॉच मूवी. नो, अभी बताया ना, श्याम इज सिंगुलर. वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है? श्याम. एंड श्याम इज सिंगुलर, तो इसलिए वो सेंटेंस करेक्ट है. नाउ आई एम राइटिंग अनदर सेंटेंस. Yes, fill in the blank. Either Ram or his children dash able to watch movie. Are able to. Are able आएगा. Are able, ma'am. Are able.
Okay, fine, good. It should be are able. Now I am repeating. Now tell me what will be the word in the blank? Is. 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 क्यों इज आएगा? बिकॉज अब राम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. इफ बिकॉज वर्ब के पास कौन है? राम, एंड राम इज सिंगुलर. इन प्रीवियस सेंटेंस वर्ब के पास कौन था? चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. let us move ahead. Let us see next case. Uncountable nouns. Uncountable nouns like furniture, equipment, stationery, luggage, weather, advice, clothing, footwear, crockery, machinery, cutlery, scenery, poetry, hair, luggage, news take singular verb. रिमेंबर, ये जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश. एंड इफ दीज वर्ड्स आर देयर, आपको लगेगा बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत सारा लगेज है, बहुत सारे हेयर है, बहुत सारे बाल है. स्टिल यू हैव टू कंसिडर दीज वर्ब्स एज सिंगुलर. जैसे यहाँ पे लिखा है फुटवेयर. फुटवेयर यानी क्या? जूते चप्पल. तो मैडम मेरे पास 4 फुटवियर्स है, तो आप फुटवियर्स बोल ही नहीं सकते. फुटवियर्स इज नॉट देयर इन इंग्लिश. और आप ऐसा नहीं बोल सकते आई माई फुटवेयर्स आर एक्सपेंसिव. दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग सेंटेंस. आपको क्या बोलना पड़ेगा? माई फुटवेयर इज एक्सपेंसिव. देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है. द फर्नीचर इज क्वाइट कॉस्टली. You cannot say the furnitures are costly or expensive. Similarly, you cannot say a lot of stationaries are used in offices. You have to say a lot of stationery is used in offices. Are you understanding? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now I am writing one sentence in the chat box. Tell me what is going to be correct. Yes, tell me what should be there in the blank. The scenery of Kashmir is Is. beautiful or are beautiful? Is. Is Is beautiful. beautiful. Okay, another one. Tell me what is wrong here. Hears. Hears नहीं चाहिए, वहां पे क्या चाहिए? Hair. Yes. Hears. Okay, fine. One last sentence. एडवाइसेस नहीं चाहिए, एडवाइस चाहिए. एडवाइस, उसका प्लूरल होता ही नहीं. मैडम डोंट गिव अस एडवाइसेस. इट विल बी मैडम डोंट गिव अस एडवाइस. Okay, so you have to always remember here, many a times many people commit mistake while using these words. They blindly use plural forms of verb while using these words. मशीनरी, कटलरी, लगेज. तो आपको ये ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट देखो 8th वाली केस क्या है? प्लूरल नंबर अप्लाइड टू डिस्टेंसेस, हाइट्स, मनी, वेट्स take singular form. For example, 10 miles is not a big distance.
इवन इफ इट इज माइल्स हियर, पर डिस्टेंस कितना है, एक ही है, और वो एक डिस्टेंस कितना है, 10 माइल्स का. सो डिस्टेंस इज सिंगुलर though that distance consists of 10 miles. So that is why here we will use is. You cannot say 10 miles are not a big distance, because here you talking about distance, you are not talking about miles. Similarly, 50,000 rupees per month is a good salary. तो यहाँ पे रुपीज है, पर मंथ आर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे इज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, टेल मी. इन दिस सेंटेंस is has been used for which word? Plural. आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है. तो बताओ, 50,000 रुपीज पर मंथ इज अ गुड सैलरी. तो यहाँ पे इज वर्ड हैज बीन यूज फॉर व्हाट? Salary. 50,000. सैलरी. सैलरी सिंगल सैलरी. ही है, सैलरी सिंगल है. भले ही वो सैलरी आपकी 50,000 की हो, बट सैलरी इज सिंगुलर, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको सिंगुलर चीज कंसीडर करनी होती है. फाइन. शुड आई राइट वन मोर एग्जाम्पल? आई एम राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स. Tell me, 35 runs dash a small score. Is. Is a small आर score, ma'am. आएगा, रन से तो ईज आना चाहिए या आर आना चाहिए? Is आएगा मैम, क्योंकि स्कोर है. हाँ, क्योंकि वो स्कोर है, स्कोर सिंगल है, इसलिए वहां पे क्या आएगा, इज. नाउ लेट अस कंटिन्यू. Nouns like amends, compasses, glasses, goods, trousers, tongs, police, people, and descriptives like rich. Ma'am, voice not is here. Bhumika ma'am, from your side, voice is not reachable here. We are not audible to you, ma'am. Yes. Probably students, there is a technical issue. Ma'am will just start again, no problem. Just wait for. Students, don't leave the meeting, beta. Very soon, ma'am is going to join. Yes, ma'am. Students, please answer me. Am I audible and visible now?
Yes, yes. Yes, ma'am. Okay, okay, Yes, fine. yes, Let us ma'am. continue. I'm again sharing my screen with you. Okay, ma'am. Fine. I hope you are able to see the screen as well. Yes, ma'am. Yes, Ha. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I will repeat ninth point. You can see number of words here like amends, compasses, glasses, goods, trousers, even rich, blind. So whenever you are using these words, you have to consider them as plural. So you have to say the rich are becoming richer. You cannot say the rich is becoming richer. It will always be the rich are becoming richer. Similarly, her glasses are expensive. Now tell me, somebody can wear at one time how many glass? Only one. एक ही चश्मा पहनेगा कोई भी एक एक समय पे. तो ग्लासेस वहां पे आपको लग रहा होगा प्लूरल है. ग्लासेस एक ही चश्मा पहन रहे हैं बट आपको बोलना क्या है? ग्लासेस. ट्राउजर मतलब आपका पैंट. तो इवन इफ यू आर वेयरिंग वन पैंट बट यू हैव टू से ट्राउजर्स. तो हमेशा दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म. Now I am writing one sentence in the chat box. You tell me what will be its correct answer. The police dash in discipline. The police is indisciplined. No, it should be R. R, are. ma'am. Sorry. The Sorry. police are in so it will just now I have mentioned here that these words police, people, rich, blind, you have to use them as plural. And then the last case in sentences beginning with here or there, the true subject follows the verb. For example, there are four boys standing there. तो जब कोई सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होता है, सो आपको किस रूल कैसे फॉलो करना है? यू विल कंसीडर, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्चुअल सब्जेक्ट हियर. देयर आर फोर बॉयज स्टैंडिंग देयर. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट whom? वी आर टॉकिंग अबाउट फोर बॉयज विच इज प्लूरल. इसलिए देयर के बाद क्या आया? आर. देयर आर, because you are talking about four boys which is plural. Ma'am, you are not audible clearly. See your mic, beta. Mom is audible, beta. She is audible very clearly. Check your mic, beta. Mom, please continue. Sorry for disturbance. Okay, okay, fine. Thank you. Now, see the second sentence. There is a tiger behind the trees. In first sentence, after there, we have written are. But in the second sentence, we have written is after there. Because in first sentence, we were talking about four boys, which is plural. Whereas in second sentence, we were talking about one tiger, which is singular, and therefore there is a tiger behind the trees. Similarly, here is your cup of coffee. So you are talking about only one cup of coffee. So you have to see here is your cup of coffee. Now I am writing one sentence in the chat box. You tell me what is right. It. There are
Tell me what word will you use in the given blank? Are. There are many super rich people in our country, because here we have to use are for people. Okay, one last sentence. Tell me what will you use here? Is. Is. So there is Is. a Is, ma'am. girl standing near the signal. So you have to check. ऐसा जरूर नहीं है, blindly नहीं करना है कि there आ गया तो R लिखो. You have to check whether in the given sentence the subject is plural or singular, and accordingly after there you have to use is or are, was or were, have or has. Fine. Now Yes, ma'am. I have prepared lot many exercises for you. So let us study all these exercises. Could you see exercise on your screen? Yes, ma'am. Huh. Now I have given two options in each sentence. You have to choose the correct option. Annie and her brothers. Are. Are. Annie and her brothers are at school. At school. Next, either my mother or my father dash. Is. Is coming to meeting. Coming the meeting. Very good. Third sentence का answer बताओ. The dog or the cats. Are. Are. Outside. Are outside. Very good. The dog or the cats are outside. Now suppose I want that you should use is in this sentence. मैं चाहती हूँ कि आप इस सेंटेंस में easy इस्तेमाल करो. तो what changes will you make in the given sentence? थर्ड वाले सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे मैम कैट्स को लाएंगे और सेकंड प्लेस पे डॉग. very good, very good. So you have to replace dog and cats. आपका सेंटेंस कैसा बनेगा? The cats or the dog is outside. Fine. Fourth sentence. Yes. Either my shoes or your coat dash always on the floor. Is. Is. Because here shoes may be plural but coat is singular, और verb के पास में जो रहता है we have to consider that. तो verb के पास कौन है? Coat. And coat is singular, so we will use is. हाँ, अब ये sentence में मुझे बताओ what verb will you use? George and Tamara. Doesn't. Doesn't. Answer doesn't is a wrong answer. Don't. Don't. क्यों don't होगा? क्यों don't होगा? कौन बताएगा इसको? सिंगुलर नाउन है मैम इसलिए. सिंगुलर नाउन नहीं है वो. सिंगुलर जॉर्ज सब्जेक्ट. एंड तमारा. Plural. प्लूरल एंड यूज दो किया मैम. एंड और एंड है, और मैंने बताया था एंड रहते हैं तो आपको प्लूरल कंसीडर करना पड़ेगा. राम एंड Yes, श्याम ma'am. का एग्जांपल दिया था ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. George and Tamara don't want to see that movie. Here it is a compound subject which is joined by the word and therefore you have to consider that subject as plural subject and you will use don't. हाँ, 6th sentence में बताओ. Benito Doesn't. doesn't know the answer. हाँ, Benito is singular and with all singular you will always use doesn't. So it will be Benito doesn't know the answer. हाँ, अब 7वां वाला जो सेंटेंस है you read it very carefully. आंसर देने की जल्दबाजी मत करो. Take your time, read the sentence twice or thrice and then you answer me. One of my sisters is or are going on a trip
to France? मैम is आएगा R, ma'am. because of one of my sister justify किया वहाँ पे. देखो यहाँ पे एक वर्ब है इज या आर, उसके बाजू में कौन है? सिस्टर्स. तो मैडम आपने तो बोला था अगर वर्ब के बाजू में प्लूरल है तो वी हैव टू यूज आर, लेकिन यहाँ पे सिस्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही. वन ऑफ My माई sister. सिस्टर्स. हाँ, मतलब एक ही सिस्टर के बारे में बात हो रही है. सपोज आई हैव 3 sisters, so one of my 3 sisters is going on a trip. तो आप मेरी 3 बहनों में से एक फ्रांस जा रही है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस. ओके, अब 8वां सेंटेंस बहुत ही ध्यान से आपको देखना है एंड देन आंसर मी. द मैन विथ ऑल द बर्ड्स लिव और lives on my street. Leave. Live. Live आएगा. Leave ma'am. Yes, ma'am. Some are saying live, some are saying leaves. बोल रहे leaves आएगा. वो लोग explanation दो. Why it should be leaves here? Man has to leave. Man is because of the man. Yes. देखो यहाँ पे birds का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. बर्ड्स तो एक्स्ट्रा वर्ड हो गया. द मैन, मेन सब्जेक्ट कौन सा है? मैन. आदमी जिसके पास बहुत सारे बर्ड्स है, मेरे घर के सामने या मेरे स्ट्रीट में रहता है. सो यहाँ पे यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, यू आर टॉकिंग अबाउट द मैन. तो मैन के लिए क्या आएगा? लिव या लिव्स? Lives. Leave. So the man with all the bird lives on my On my street. street. जिन लोगों को कंफ्यूजन था, जो लोग लिव आंसर बोला था, is the confusion, has the confusion got cleared now? Yes, ma'am. Okay, so let's move towards another group of exercise. 9th वाला sentence देखो. The movie including all the previews. बताओ टेक आएगा या टेक्स आएगा? Takes आएगा मैम. Takes. क्यों टेक्स? Because of the movie. The movie है मैम. The movie is singular. यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ मूवी की, प्रीव्यूज की बात नहीं चल रही है. सो द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज टेक्स अबाउट 2 hours टू वॉच. 10th सेंटेंस ध्यान से बताइए क्या आएगा? The players as well as the captain want to win. Want. Want or want? Want. Want. Because this is a compound subject. The players and the captain. And को आप as well as भी बोल सकते हैं. The players and the captain want to win. Next, either answer Is. is, क्योंकि यहाँ पे आंसर सिंगुलर है. सो ईदर आंसर इज एक्सेप्टेबल. नाउ रीड द सेंटेंस नंबर 12 very carefully and answer it. Every one of those Every one of those Is. R. Is. is, ma'am. आप बुक्स की तरफ मत जाओ. Every one of those books, Is. उन सारी किताबों में की Is. किताब is fiction. मैंने आपको बताया था every, anyone, someone, no one, these are called as, इनको क्या बोला जाता है? Is. क्या बोला जाता Singular है? indefinite pronoun subjects.
Very good, very good. They are called as singular indefinite pronouns. So everyone is singular indefinite pronoun, and for everyone we will use is, not are. So every one of those books is fiction. Nobody is also singular indefinite pronoun. तो बताओ nobody के साथ क्या आएगा? Nose. Nose. Knows. वो Nose. singular है, and for singular we use as in the No. verb. So nobody knows the trouble I have seen. Next, dash the news on at 5 or 6 Is. 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 News भले ही अपने को लग रही है plural, but if I will just move the slides, इस slide में देखो point number 7, all the words like furniture, equipment, stationery, luggage, weather, advice, clothing, footwear, crockery, machinery, cutlery, scenery, poetry, hair, luggage, news. They take singular form. तो न्यूज भले ही उसमें एस है बट वो प्लूरल नहीं काउंट किए करेंगे. वी विल कंसिडर it as singular, and therefore the answer of sentence number 14 is the news on at 5 or 6. Next sentence, mathematics Is are. Is. is. मैथमेटिक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. इट इज ऑलवेज मैथमेटिक्स. भले वहां पर एस है बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लूरल. सो इट इज मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट while civics Is. Andrea's favorite. हाँ, you tell me, मुझे एक और सब्जेक्ट का नाम बताओ which ends with S. बताओ कोई और एक आधे सब्जेक्ट का नाम which ends with S. Play. सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे है ना मैथमेटिक्स, सिविक्स, इस वाले पढ़ने वाले Science. not science. Science does not end with S. Statistics. Physics is the correct answer. Statistics. Or Economics. statistics. Very good. Statistics, economics. Very good. So these are all the subjects name which end with S, but that does not mean they should be considered as plural. Now next sentence बताओ. $8 dash the price of a movie these days. All of you please mute your mic. All of you mute your mic first. There is a lot of noise from somebody's house. Yes. Now somebody answer it. अब आप unmute करके answer करो. $8 is आएगा या R आएगा? Is हमने डॉलर्स के लिए लिया है. मैम $8 किया है इसलिए. $8 के लिए नहीं लिया है, प्राइस के लिए लिया है, इसलिए इज आएगा. $8 इज द प्राइस ऑफ अ मूवी, तो यहाँ पे इसलिए इज आएगा. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, डैश द tweezers in this drawer. और इफ यू मे नॉट बी नोइंग ट्वीजर, शायद आपको ट्वीजर ये पता नहीं होगा, तो मैं दूसरा वर्ड यहाँ पे लिख रही हूं. हाँ, नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. डैश द सीजर्स इन द ड्रावर. R. Is or are? R. मैम इज आएगा क्योंकि सीजर्स है. सीजर्स है तो इज आएगा. क्योंकि वो सीजर्स को सीजर्स ही बोलते ना. बट सीजर वहां पे प्लूरल है ना. सिंगुलर सीजर सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल.
यहाँ पे तो एस क्लियरली लिखा है, so it is R. Drawer. Are the scissors in this drawer? It should be R. Then your pants. Is. Is आएगा क्या? R. R. R आएगा S, मैम. S R. is R. Yes. Then next बताओ. There dash 15 candies in that bag. Was. Was. There were आएगा 15 was candies. आएगा. Candidate. Was. It is were. क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, देयर के बाद ब्लाइंडली आंसर नहीं देना है. फर्स्ट सी द Ma'am, there. There were 15 candies in that bag. Now there dash only one left. अब क्या आएगा? There is one. अब one है तो is आएगा. There were 15 candies in that bag. Now there is only one left. Next, the committee debates or debate these questions carefully. Debates आएगा क्योंकि committee is made up of many people, but that is a collective noun. Committee is one, तो इसलिए क्या आएगा? Debates. The committee members. अब बताओ क्या आएगा? Lead. Very good. The committee members lead very different lives in private. अब ये देखो, the prime minister together with his wife dash the press cordially. Great. Greets आएगा या greet आएगा? Grades. यहाँ पे उसकी वाइफ सिर्फ उसके साथ में है, बट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए ग्रीट्स आएगा. जैसे वो एक सेंटेंस हमने पढ़ा था ना मैन वाला, ये देखो, सी सेंटेंस नंबर 8. द मैन विथ ऑल द बर्ड्स लिव्स ऑन माई स्ट्रीट. बर्ड्स उसके साथ में है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट इज मैन, नॉट बर्ड्स. सिमिलरली इन दिस सेंटेंस प्राइम मिनिस्टर की वाइफ उसके साथ में है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ओनली, तो इट शुड बी ग्रीट्स. द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज वाइफ greets the place cordially. Now last sentence. All the CDs, even the scratched one, Is. इस कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं हम लोग? सारी की सारी सीडीज जो होती ना पहले के जमाने में होती थी, आर आएगा. ऑल द सीडीज, सारी की सारी सीडी. जो स्क्रैच हो गई वो भी, इवन द स्क्रैच्ड वन. इन दिस केस तो वहां पे आर आएगा. यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सीडीज, और एक जो स्क्रैच वाली सीडी है उसके बारे में भी. ऑल द सीडीज इवन द स्क्रैच्ड वन आर इन दिस केस. आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना पड़ता है. You all students, you are quite hurriedly giving answers, and that's why you are making mistakes. You have to see. आपको हर बार वो देखना है कि इन द सेंटेंस कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, and then accordingly choose the right verb. हाँ, अब देखो यहाँ पे I have given 2 sentences. You have to tell me which one is correct. First case, every one of the shirts has a green collar, or every one of the shirts have a green collar. Which is correct? ध्यान से पढ़ो उसको. A or B? Which answer is correct answer? B. ए आंसर आएगा ना. कितनी बार बताया है? एवरीवन, समवन. Yes. These are
indefinite singular pronoun और indefinite singular pronoun में we always use has. सिंगुलर के साथ हैज आएगा, नॉट हैव. सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. अब सेकेंड वाले सेंटेंस में द सिंगर along with a few others play the harmonica on the stage. और बी में है द सिंगर along with few others plays the harmonica on stage. B. Sentence A is B. correct. B. बी, वेरी गुड. अभी सबने करेक्ट आंसर बोला. इट इज बी, क्योंकि यहाँ पे सिंगर के साथ बाकी के लोग होंगे, बट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट सिंगर, और इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा? प्लेज. आंसर बी इज करेक्ट आंसर. देन थर्ड, सैंडल्स एंड टॉवेल्स आर इसेंशियल गियर फॉर अ ट्रिप टू द बीच. ऑप्शन बी इज सैंडल्स A. एंड टॉवेल्स A. इज. हाँ, इसमें क्या आंसर आएगा? ए. Answer A. Sandals and towels, this is a compound subject. Next, the president or the vice president are speaking today or is speaking today. B. B, ma'am. B. So यहाँ पे और है. So at a time you have to consider one subject, and for one subject we will use is. Is. Either Cassie or Mary pays the employees this afternoon. And sentence B is either Cassie or Mary paid the employees. A. A answer. A. A आएगा, क्योंकि और है तो whenever there is or we have to consider only one subject, and if that subject is singular we will consider as singular subject. तो here या तो कैसी या मैरी, दोनों में से एक को लेना है, and both are singular, so we will use pays. So answer A is correct. इसमें बताओ, either the sculptor or the paintings are in the museum today. क्या आएगा? A. Yes, the correct answer is A. A. क्यों A A answer. आंसर क्यों करेक्ट है? यहाँ पे तो और है, और में तो हम लोग सिंगुलर लेते हैं ना बेटा. Paintings are आंसर singular. Paintings are singular. हाँ, क्योंकि paintings are पेंटिंग्स आर के नियर है. अगर मान लीजिए मुझे ये सेंटेंस में इज वाला आंसर करेक्ट करना है, तो मैंने क्या चेंज करना चाहिए? Either the paintings or the sculpture. Very good, very good. Either the paintings or the sculptor is in the museum today. हाँ. Tell me the answer of seventh sentence. What is the answer of sentence number 7? A. A, ma'am. A answer. A. A. Very good. Answer A is correct because we will use R. Wrong. Hats is a We will plural. use R for hats. Now, Hats. now there are 3 options for sentence 8. You have to read all the 3 options and choose the correct answer. B. Choose correct B. answer. B. B answer. Ma'am, B. Is it B? Yes, ma'am. Yes. Neither she nor I is getting wrong, because here you have to choose I, and after I we always use M. Answer of 9 sentence batao. B. Very good. Each of the B dancers answer. twirl brilliantly. No. Answer is B or A. 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 It should be A, क्योंकि यहाँ पे each है, and each is a singular indefinite pronoun. So here answer A is the correct answer. Each of the dancers twirls brilliantly. Then last of this slide, mustard greens are my favorite vegetable, or mustard greens is my favorite vegetable. What is the correct answer? B. 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 B.
क्योंकि भले यहाँ पे ग्रीन्स D. हैं बट वेजिटेबल इज सिंगुलर, तो यहाँ पे Singular. वेजिटेबल के लिए वी विल यूज इज. नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड, आखिरी वाली स्लाइड है ये ऑफ टुडेज सेशन. हाँ बताओ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल और द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल? Kashmir B. is beautiful. B. B. Yes. Because I have told you that sceneries, this word does not exist in English. It is always scenery. 12th batao, the furnitures or the furniture. B, ma'am. Furniture. B, ma'am. Furniture. B. Furnitures. B. Furniture's word does not exist in English. Next, I love to read Shakespeare's poetries or Shakespeare poetry. 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 B Because answer. again, poetry's plural is not there in English. Next, everyone at the party was enjoying the food, were enjoying the food. B. A answer. B. Answer is B आएगा या A B. आएगा? A. It A. should be A. अरे कितनी बार बताया? Everyone is an indefinite singular pronoun. So the answer A is correct. Everyone at the party was enjoying the food. And बताओ last वाला, our parents keeps on giving us advices. Yeah, our parents keep on giving us advices. B. Advice. 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 Advices होता ही नहीं है. Answer should be B. Our parents keep on giving us advice. Yeah. अब ये देखो, see this slide. If you want to exercise some more sentences, though some students may feel कि we need more practice. So if you want to practice more sentences, you can note down these two names of these two websites where you can get lot many sentences for exercise. One is www.mastguru.com and second is www.indiabigs.com. So if you visit these two websites, you will find lot many sentences and you can keep on solving those sentences, and in this way you can practice a lot. Okay, Have ma'am. have you all noted down these two websites? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So thank you all of you for today's session. But before we quit, all of you please take screenshot of one slide which I am sharing with you. Wait. Now it's time to. Ma'am, just a minute. I want to share one slide and let students take its screenshot. Okay, ma'am. Madam, please allow me to share the screen. Yes, ma'am. Yes, students. try I have shared tenses in active voice. All of you please take its screenshot. It is going to be useful for my tomorrow's session. Please take this screenshot. Yes, ma'am. Lily. Have you all taken? Yes, ma'am. Okay. Take one more screenshot. Please take one more screenshot. This one. Yes. Done. Yes, ma'am. All of you take these two screenshots, and tomorrow, using these two Yes, ma'am. screenshots, we will study change the voice. And I'm going to Yes, forward ma'am. both these slides to Snehal madam so that she can even forward it in your WhatsApp group. So with this, I end my today's session on subject verb agreement.
tomorrow we are going to study very important session from your academic point of view, that is change the voice. Though you must have been studying change the voice since 5th standard, but still you need some more practice sessions. So tomorrow's session will be change the voice. So I'm done with this, ma'am. Now I hand over the Okay. stage to you. Now it's time to express my gratitude for today's program. Today's session was based on subject verb agreement, and ma'am has explained it in a very lucid manner. We all are greatly benefited by